Now let us start the session. Today we are going to start session number 8 of chapter number 6 triangles, and we are going to solve the remaining questions of exercise 6.5. 6.5 थोड़ा बड़ा exercise है, so कोशिश करेंगे थोड़ा जितना हो सके questions complete करने का. And see the question in figure 6.53. ABD is a triangle right angled at A. This is a right angle, and AC is perpendicular to BD. Show that AB square is equals to BC into BD, and AC square is equals to BC into DC, and AD square is equals to BD into CD. So now let us start the question. We have studied in theorem 6.7, if the perpendicular drawn from the vertex of a right angle to the hypotenuse, then the triangle formed on the either side of the perpendicular line are similar to whole triangle and similar to each other. Theorem yaad hai? Yes, sir. Okay, so we are going to write that statement. Clear? Now, according to this statement, this triangle, the first triangle, is similar to whole triangle, and the second triangle is also similar to whole triangle, and these two triangles are similar to each other. So we'll write like that. So ये triangle ABC यहाँ पर है. Triangle ABC is similar to whole triangle, and triangle ABC is similar to this. These two triangles are similar, and the last one is whole triangle is similar to this smaller triangle. So ये तीन हम लोग एक one by one consider करेंगे. So first we are going to take this one. Triangle ABC is similar to triangle DBA. So we will write the corresponding sides. So again, for corresponding sides, we are going to concentrate on corresponding angles. पिछले क्लासेस में भी मैंने बताया था. So इसको मैं 1 2 ले लिया. 1 का corresponding angle क्या होगा? B. 4. 2 का corresponding angle क्या होगा? Angle D. 3. Right. तो यहाँ पे जो first triangle में 2 है, okay, और this is full triangle. So 2 के opposite side में क्या है? What is the opposite side of 2? BC. BC. And what is the opposite side of D? Full triangle. Full triangle. AD. BA. Right. Now what is the hypotenuse of this triangle? Hypotenuse is AB. And what is the AB. hypotenuse of full triangle? AB. Full triangle. BD. So we'll take the ratio of AB upon DB first hypotenuse, then the side opposite to angle 2 and angle D. The reason we will write corresponding sides of similar triangles are proportional. Now दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? This will be AB square and this will be BC into BD. AB square. AB square is equals to BC into BD. So ये first bit हो गया हम लोग का. We have completed the first bit. Now for second bit we will take this one. In triangle ABC and DAC, these two triangles are similar. So their corresponding sides we are going to identify. फिर से देखो, ABC ये वाला triangle है और DAC ये वाला triangle है, दोनों triangles. So angle 2 का opposite side है BC, and angle 2 is equal to angle D. उसका corresponding angle ये है. D का opposite side बताओ, छोटा वाला triangle second. AC, right. Now angle 1 का corresponding angle B है, so B का opposite side first triangle AC, and 1 का opposite side CD. So we'll take the ratio AC upon DC is equals to BC upon AC. Reason, corresponding sides of similar triangles are proportional.
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? AC square into square is equal to BC into राइट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC. सो ये सेकंड बिट का प्रूफ हो गया. नाउ थर्ड बिट के लिए DBA फुल ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं. ठीक है. सो फुल ट्रायंगल में ध्यान से देखो, फुल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बताओ. BD. BD. What is the hypotenuse of this triangle? AD. 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 Right. Correct. Now what is the angle opposite to angle B? Full triangle. The side opposite to angle B. AD. AD. Side opposite to angle 1. CD. Right. So CD. AD by CD CD. is equals to BD by AD. दोनों का hypotenuse ले लिया. Now again the reason is same. The corresponding sides of similar triangles are proportional. So on cross multiplication we are getting AD square is equals to BD into CD. This is the question number 3. Any doubt? No, No, sir. Okay. No, sir. So now we are moving sir. towards question number 4. ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Prove that AB square is equals to 2AC square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे. दिस इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट सी और आइसोसेलेस है. इसमें BC इज इक्वल्स टू AC है. राइट, फिगर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir. Okay. Now ABC is an isosceles triangle right angled at C and BC is equals to AC. Let it be equation number 1. Now as this triangle is a Pythagoras right angle triangle, we can use Pythagoras theorem. So what you will get if you use Pythagoras theorem? AB square is equals to BC square into BC square into plus AC square. Into नहीं plus है हाँ. So by Pythagoras theorem AB square is equals to BC square plus AC square. Now we can replace BC by AC. Why? Because BC is equals to AC. Right. So AB square is equals to AC square plus AC square. Now AC square plus AC square कितना हो जाएगा? 2AC square. Right. So this will become 2AC square. यही प्रूफ करना था. किसी को कोई डाउट है? नहीं No, सर. Okay. Next question. Question number 5. अब ये उसका कन्वर्स है. जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का कन्वर्स है. ABC is an isosceles triangle with AC is equals to BC. If AB square is equals to 2 times AC square, prove that ABC is a right triangle. So फिर से वही डायग्राम मैं बना रहा हूँ, बट यहाँ पे अभी ये 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है. ये हम लोग को प्रूफ करना है. दिस इज 90 डिग्री. राइट. So what is given that AB square is equals to 2 times AC square. So पहले in triangle ABC we have AC is equals to BC. Let it be equation number 1. This is given. Next, what is given that AB square is equals to 2 times AC square. 2 times AC square को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. AC square plus AC square. फिर हम लोग एक AC स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं BC स्क्वायर में. Why? Because AC is equals to Because AC is equal to Right, because AC is equals to BC. Now see carefully the converse of Pythagoras theorem. If a square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side, that is AB. कौन सा एंगल है? Opposite side of AB. Opposite Angle of angle. C. Huh? angle C. Right. So opposite to the angle opposite to the first side, that is AB, is angle C. So this will imply angle C is equals to 90 degree. So what is the reason we have to write here? By converse of Very good. By converse of Pythagoras theorem. So now one angle is 90 degree. That means ABC is a right triangle. Any doubt? No, No, sir. no sir. Now sixth No, sir. question. No sir. ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. So हम लोग क्या करेंगे? We'll draw one equilateral triangle. So each side 2 है, 2A दिया हुआ है.
and we will draw AD perpendicular to BC. ठीक है, हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है. वो प्रॉपर्टी चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज वी कैन शो आल्सो, दैट कैन बी shown easily also. So we'll take these two triangles. पहले मैं वो दिखला देता हूँ. We'll take these two triangles, and in these two triangles AB is equals to AC, both are equals to 2A, and AD is perpendicular to BC, so these two angles are equal. Why? Each 90. AD is altitude, so each 90 Right. degree. And AD is common to both the triangles, so these two triangles are congruent. By which criteria? SC. Yes, yes. ए- SS. SS com. But ये angle तो included नहीं है, देखो, this angle is not included. ASA. दो साइड लिए हम लोग, AB और AD. ASA. ASA. दो एंगल लिए ही नहीं है ना हम लोग. अच्छा. RHS, hypotenuse, right angle and one side. So these two triangles are congruent by RHS congruence rule. So BD is equals to CD by CPCT, and both will be equals to A. Now हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में से कोई एक ट्रायंगल लेंगे. विल टेक ट्रायंगल ABD एंड विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. अप्लाई करो इन ट्रायंगल ABD. व्हाट यू विल गेट बाय पाइथागोरस थ्योरम? AB square 2A square is equals to A square plus In terms AB. of sides, in terms of sides, अच्छा. AB square is equals to BD square plus AD square. right? AD square plus BD square. Now AB is 2A and we need to find AD. Altitude means AD is an altitude here. And BD is A. So we are going to substitute 2A whole square is equals to AD square plus A square. What is 2A whole square? 4A square. 4A square. Minus A square. 3A square. 3A So square. AD square is equals to 3A square. And what will be AD? 3A. Square root of 3A square कितना होगा? Root 3A. Right. So AD is equals to root 3A. This is the altitude of an equilateral triangle. Now we'll move towards question number 7. This is very very important. बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. So diagonal इसमें कौन कौन सा है? AC और BD. What is the properties of diagonals of rhombus? Akifa, Yes, sir. what is the properties of diagonals of rhombus? The diagonals bisect each other and opposite angles are equals to 90 degree. Only diagonal के बारे में बताओ. Diagonal of rhombus properties. So each diagonals bisect each other at 90 degree. Very good. So diagonals, we know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree. So all these angles means angles around A or O is 90 degree. Angle AOB, angle BOC, angle COD, angle DOA, all these angles are equals to, each angle is equals to 90 degree. Now if this angle is 90 degree, one more, diagonal bisect each other. So OA we can write half of AC. Similarly OB we can write half of BD. Now we will apply Pythagoras theorem in any one triangle. So we are going to take triangle AOB. What you will get if you apply Pythagoras theorem? AB square is equals to OB square plus OA square. Right. So from right triangle AOB we have AB square is equals to OA square plus OB square. Now OA कितना है? Half AC. What you will get half AC whole square? OA. OA.
अरे half is in place of OA we will substitute half AC. So after OC. after 1 by substituting 4 what you will 1 get? by 4 AC 1 by 4 AC square. Very good. 4 is What about OB square? इसको substitute करेंगे 1 by 4 BD 1 square. by 4 BD Okay. square. So half AC whole square plus half BD whole square. So this will become 1 by 4 AC square and this will become 1 by 4 BD square. So we can take 1 by 4 common. So 4 को हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 times AB square is equals to AC square plus BD square. This is clear? Yes, sir. yes. Okay. Similarly, 4 times BC square is also AC square plus BD square. 4 times CD square is also AC square plus BD square. 4 times AD square is also AC square plus BD square. That we can write directly similarly. Okay, now we are going to add all these 4 equations. What you will get in left hand side. Adding all these 4. Anish, what you will get left hand side? Adding all those 4 AB square plus 4 BC square plus 4 CD square plus 4 DA square. Very good. Hemant, what you will get right hand side if you add? ABCD, rhombus ABCD ABCD equals to ए AB नहीं नहीं एक मिनट रुको रॉन्ग बोल रहे हो प्रियांशी व्हाट यू विल गेट इफ यू ऐड ऑल दिस 3 AC square plus 3 BD square. 3 मिलेगा कि 4 मिलेगा देखो चारों ऐड कर रहे हैं ना 4 मिलेगा कि 3 मिलेगा 4 AC square. हाँ so if we add all these 4 equations we'll get 4 times AB square plus BC square plus CD square plus DA square and 4 times AC square plus BD square. This step is clear? Yes, sir. Now 4 will be cancelled and we'll get final answer this step. So यही proof करना था देखो sum of the squares of all 4 sides of rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. Step clear है? Very Yes, sir. important Yes, theorem. sir. Yes, sir. Okay. Now we'll move towards one very long question. थोड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 अभी जो आज करने वाले हैं. So in figure 6.54, this is the figure 6.54. O is a point in the interior of a triangle ABC. OD is perpendicular to BC. OE is perpendicular to AC. And OF is perpendicular to AB. Show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equals to AF square plus BD square plus CE square. क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहा है बट बहुत आसान है ये थोड़ा लंबा है. What we will do हम लोग पहले क्या करेंगे OA OB और OC को ज्वाइन करेंगे. सो पहले OA को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद OB को ज्वाइन कर लेते हैं. नाउ विल ज्वाइन OC. सो हाउ मेनी राइट ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? So 4. फुल ट्रायंगल छोड़कर हाउ मेनी राइट ट्रायंगल्स आर देयर? 6. 6. 6 right triangles. Now see what is the right hand side? AF belongs to which right triangle? AOF. Very good. AOF. And BD belongs to which right triangle? BOD. BOD. Right. BOD. And CE belongs to which right triangle? COE. COE. Right. So पहले हम लोग वो वाला right triangles लेंगे. The shaded portion, yellow color में जो shade किया हूँ, we will take these 3 right triangles. So first right triangle AOF. OA square is equals to OF square plus AF square. Now what we will do? We will shift this to this side. AF square is equals to OA square minus OF square. Let it be equation number 1. ये clear है first equation?
Yes, sir. Yes, sir. Now we'll take the second right triangle, BOD या BDO. So OB square is equals to BD square plus OD square. इसमें भी OD square को शिफ्ट करेंगे इस तरफ, तो माइनस OD square हो जाएगा. Let it be equation number 2. Now we'll take up the third right triangle. Pythagoras theorem apply. What you will get? Nikhil. CE square plus EO square equals to OC square. फिर से बोलो. CE square plus EO square equals Okay. to OC square. That is OC square is equals to OE square plus C square. Correct. So now what we will do? We'll shift OE square to this side. तो माइनस OE square हो जाएगा. So let it be equation number 3. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तीनों का ऐड करेंगे. We'll add all these three equations. So what you will get left hand side? AF square plus BD square Plus BD plus CE square. plus C square. एंड राइट हैंड साइड में दिस प्लस दिस, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखने जा रहा हूँ. एडिंग 1 2 3 वी गेट. ओके, दिस स्टेप इज क्लियर. Yes, sir. हाँ, जो प्रूफ करना है उसमें प्लस वाले सारे टर्म पहले है. वो ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं. सो ये हो गया प्रूफ फर्स्ट बिट का. क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके. नाउ Yes, sir. फॉर सेकेंड बिट में एक मिनट में सेकेंड बिट वापस जा रहा हूँ पीछे. सेकेंड बिट में ध्यान से देखो, ए एफ बी डी सी हम लोग ले चुके हैं. नाउ ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर. व्हाट इज विच राइट ट्राइंगल बिलोंग्स टू ए ई स्क्वायर? ए ई किस राइट ट्राइंगल में है? AOE. ये वाला. और सी डी? COD. राइट. COD. एंड बी एफ स्क्वायर BOF. BOF. मतलब जो ये जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक थे हम लोग. सो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द शेडिंग. नाउ ये ग्रीन कलर जो शेडिंग दिख रहा है उसका हम लोग उसमें थोड़ा देखेंगे, राइट ट्राइंगल यूज करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक दिस ट्राइंगल. व्हाट यू विल गेट? ए ई स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना मिलेगा बताओ? Sir, OA square minus OE square. Very good. ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर या ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर. सेकेंड, व्हाट यू विल गेट? कौन सा ट्राइंगल ले? चलो ये ले लेते हैं. ये बी एफ स्क्वायर कितना मिलेगा? OF square minus ओ बी BF स्क्वायर. square. ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस OB. ओ एफ स्क्वायर. OA square. एंड व्हाट यू विल गेट? सी डी स्क्वायर. OD square. OC square minus OD square. राइट. सो पहले हम लोग ट्राइंगल बी ओ एफ ले रहे हैं. इक्वेशन 5 मिल गया. नाउ विल टेक ट्राइंगल सी ओ डी, विल गेट द इक्वेशन 6. अब क्या करेंगे हम लोग? ये तीनों को ध्यान से देखो, ये तीनों को ऐड नहीं करेंगे हम लोग. ये वाला फिर से लिखेंगे जो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ किए. बट व्हेन वी आर राइटिंग वी आर मेकिंग पेयर. ओ ए स्क्वायर के साथ में ये लिखेंगे. ध्यान से देखो, एक मिनट. इसके साथ में मैं ये वाला लिखूंगा और ओ बी स्क्वायर के साथ में ओ एफ स्क्वायर और इसके साथ में ये वाला. ठीक है, सेम, ओनली अरेंजमेंट आई विल चेंज. ये क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. This can be replaced by AE square and this can be replaced by CD square and this can be replaced by BF square by using equation 4, 5 and 6. So हम लोग का proof complete हो गया. So now we are going to move towards the next question. Question number 9.
a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. एक एग्जाम्पल भी मैंने किया था ऐसे वाला और असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए थे. So we'll make a triangle, right triangle. This is the height. Okay, यहाँ ये विंडो का पोजीशन है और ये लैडर का फुट है. So height of the window from the ground AB is given 8 meter. Length of the ladder, that is AC, is equals to 10 meter. And what we will do, we'll apply the Pythagoras theorem. हम लोग को क्या निकालना है? Distance of foot from the base of the wall, that is BC. So if you apply Pythagoras theorem, what you will get? AC square is equals to AB square plus BC square. Right, AB square plus BC square is equals to AC square. Now we'll substitute AB 8 and AC 10. 8 square will become 64 and 10 square will become 100. So BC square कितना मिलेगा? 180 164 164. ये 100 है ना? 36 36. 100 माइनस 64 बोलो. 64 को इधर राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा. Now 100 minus 64 is 36. 36 का स्क्वायर रूट 6. So distance between the foot of ladder and the foot of base of the wall is equals to 6 meter. Question number 9 over. Now we'll move towards question number 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stack be driven so that the wire will be tight? देखे होंगे पोल, इलेक्ट्रिक पोल में एक वायर बंधा रहता है नीचे. So we'll make one rough diagram. This is the right triangle and this is the height of the pole and this is the length of the wire. Okay, so let AB is the height of the pole, that is 18 centimeter, and AZ is the length of the wire, and C is the position of stake AB at ground level. Now again we are going to use the Pythagoras theorem. What you will get? AC square is equals to BC square plus AC AB square is square. equal to AB square. Right, AB square plus BC square is equals to AC square. Now we are going to substitute AB as 18, AC as 24. Substitute कर दिए. 18 का होल स्क्वायर कितना होता है? What is the square of 18? 324. 324. What is the square of 24? 576. 576. अभी 324 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? It will become minus. So 576 minus 324. How much you will get? 252. Right. 252 का स्क्वायर रूट. 252. 252 का स्क्वायर रूट 16 नहीं होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो. सो 252 में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 6. और 2 रूट 7 अंदर है. राइट, 6 रूट 7 मीटर. सो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. अब 11 पे आ गया. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? So distance का formula क्या है? What is the distance formula? Speed is given, time is given. speed by time. Speed by time. Speed into time. Speed into time. Yes. So पहले तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ऊपर साइड कौन सा डायरेक्शन है? ऊपर नीचे.
नॉर्थ, नीचे West. चलो फिगर South. बना देते पहले। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये वाले पॉइंट से एरोप्लेन इस तरफ गया वेस्ट डायरेक्शन में अप टू पॉइंट बी, और नॉर्थ डायरेक्शन में अप टू पॉइंट ए, एंड ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एरोप्लेन्स। डायग्राम इज क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Now sir. we are going to find the distance traveled by the first aeroplane, second aeroplane. So we'll start with the speed of first aeroplane is given 1000 km per hour, and time is also given. What is the time? 1.5 1 and hours. a half hour. 1.5 hours. So distance covered by first aeroplane due north in 1.5 hour is equals to, that is OA, 1000 into 3 by 2. So we will get 1500 kilometer. So ये हो गया OA. Similarly now we'll find OB. So the speed of second aeroplane is 1200 kilometer per hour. So what will be the distance? 1200 into 3 by 2, speed into time. So कितना मिलेगा ये? 1800. Yes, 1800 kilometer. Now we need to find AB. So what you will do? What will be your step? Next step? Pythagoras. Pythagoras Right. theorem. If you apply Pythagoras theorem, what you will get? AB square is equal to OB square plus OA square. Right. So in right triangle AOB, AB square is equals to AO square plus OB square. Now we'll substitute these two values. 1500 whole square plus 1800 whole square. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. 225 के बाद 4 zeros लगा देंगे, और 18 का स्क्वायर 324. उसके बाद 4 0 लगा देंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. सो 225 प्लस 324 इट विल बी 549, है ना? ओके, उसके बाद 4 0. So please see carefully this 4 0, if we take the square root of this 10,000 into 10,000, so we'll get 100 out, बाहर 100 मिलेगा. If you remove these all 4 zeros, we'll get 100 outside. Is that clear? Yes. Yes, sir. Now 549 को हम लोग लिख सकते हैं 9 into 61. Again, what is the square root of 9? 3. 3 को बाहर निकाल लो. बाहर कितना निकल गया? पहले 100 था, अभी 3 आ गया. 300. 300. तो इसका फाइनल आंसर होगा 300 रूट 61 किलोमीटर. 300. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. Two poles of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. Microphone mute करो. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. सपोज ये दोनों हाइट के ये दोनों पोल्स है, एक छोटा और एक बड़ा, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ये बेस का डिस्टेंस दिया हुआ, दोनों का फीट का डिस्टेंस दिया हुआ 12, तो ये भी 12 हो जाएगा. अब क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो इसलिए BE और CD ये भी दोनों 6 हो जाएगा. सो पूरा 11 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5. So this is the explanation of diagram. Now we are going to write height of the pole AB is 11, height of the pole CD is 6, and distance between the foot of the pole is 12. And from C we are going to draw the perpendicular line CE perpendicular to AB. So BE is equals to DC is equals to 6 meter. उसके बाद हम लोग को AE निकालना है. AE को लिखेंगे AB minus BE, that is 11 minus 6, and it is equals to 5 meter.
अब यहाँ पे निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. टॉप्स मतलब ए और सी है, तो हम लोग को ए सी निकालना है. सो विच राइट ट्राइंगल वी आर गोइंग टू टेक? Which right triangle we are going to take? ACE. AC. AC. Okay. ACE. AC निकालना है तो ACE right triangle लेंगे. So what you will get if you apply Pythagoras theorem? AC square is equals to AE square plus EC square. Right. So in right triangle AEC, AC square is equals to AE square plus EC square. AE 5 था, 5 निकला था, और EC 12. So we'll substitute 5 square plus 12 square under root. 5 square is 25 and 12 square is 144. कितना मिलेगा finally? What? 25. 25. 144. 159. 69. 109. 169. 159. 169 का square root 169. 159. 13. Right. 13. So hence the distance between their 13. tops is equals to 13 meter. So now we are moving towards the last section, that is assignment questions. These are the 4 questions. Okay. And you have to complete all these 4 questions. Simple है, Pythagoras theorem के basis पे है. Assignment. And you have to complete these 4 questions and you have to send the answers to me through WhatsApp. And that's all for today's session. Thank you very much. Okay, आज के लेसन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? Nice, sir. I will upload after 1.5 hour or 2 hours. I will upload this video in my channel and I will share the link. You watch once again for better understanding. Okay.